Hi everyone. Good evening. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ପଢାପଢି କେମିତି ଚାଲିଛି? କାଲି କୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 9 ଥିଲା 19 ଓକେ ଏଟା ଆମେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କରିବା ସରି 9 କରିବା एनवायरनमेंट ଥିଲା ଏଟା ଠିକ ଅଛି फर्स्ट क्वेश्चन ଥିଲା ସେଥିରେ ଏଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି T cross 2 ନା T doubles 2 initiative with reference to T cross 2 initiative consider the following statements okay this global commitment to double the world wild tiger T माने एटा जणा पड़छि टाइगर रिलेटेड अछि राइट समथिंग रिलेटेड टू टाइगर्स एथरे ना अवार्ड्स दिया जाउछि एटा यार मेन काम थिला कि 2022 सुधा हमको डबल करा छि टाइगर पॉपुलेशन बिकॉज़ टाइगर्स एज हम जान चंदी बहुत हंटिंग पोचिंग हे जाउछि राइट तो ऑलरेडी टाइम करा ये हे साइलाडी ସେଥିରେ एवरी ईयर से माने गोटे टाइगर रिजर्व को अवार्ड दोचंदी फॉर देयर वर्क फॉर द कंजर्वेशन मेजर्स तो ସେଥିରେ फर्स्ट एथरे कहूछि कि पिलविथ टाइगर रिजर्व हैज वन द इनॉग्रल T cross 2 award for its remarkable contribution to tiger conservation हैला पिलविथ टाइगर रिजर्व ता कोठी अछि यूपी रे यस वेरी गुड सेदिन गोटे देइथिली जो शीट देखछो के टाइगर रिजर्व का फर्स्ट क्लास दिया आइतला ओके कौन शेयर करना कि हम आज सारे कर देती ओके एटा देखो तो ओके जो T cross 2 वरना T doubles 2 गोल्ड एटा काना ना गोटे ग्लोबल कमिटमेंट एथि केतेटा कंट्रीज अछंती जो टाइगर रेंज कंट्रीज पर अछि माने ए रेंज रे टाइगर बुलुची टाइगर तो गोटे माने हमें तो कहि परिबन तो एथि रह बोली से तो ता बुलिबो राइट तो एथि को कंट्रीज इंक्लूड करा होची एटा टिके इंपोर्टेंट आई थिंक 13 टोटल कंट्रीज अछि बोधे हां टोटल 13 अछि काउंट कर देबे और के सेट करछि ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF okay so the global tiger initiative गोटे GTI भी अछि global tiger initiative ता अंडर रे से माने एटा गोल फिक्स करथिले ना आउ टाइगर डे केबे ग्लोबल टाइगर डे 29th of July एटा कोन पे हेछि ना जो फर्स्ट टाइगर मन का पे गोटे समिट हेतिला रशिया रे सेटा 29th July 2010 रे हेतिला हला तो कमेमोरेट दैट 29th July को कोन करा होछि ना वर्ल्ड टाइगर डे ग्लोबल टाइगर डे हिसाब रे मना होछि आ टाइगर ता हमरो कोथरे आछि आईयूसीएन स्टेटस कोन एंडेंजर्ड ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड यस टाइगर इज एंडेंजर्ड हला ता छोड़ा अपेंडिक्स 1 ऑफ साइड से आसुची अपेंडिक्स 1 माने कोन तार हमें फ्री ट्रेड करि परिबा ना राइट मोस्टली प्रोटेक्टेड एनिमल्स को हमें व्यूज रहउची अपेंडिक्स 1 माने राइट्स रिलेटेड टू ट्रेड ऑफ एनिमल्स तो तार बहुत सारा प्रोहिबिशंस अछि ओके एरिया से जो सोलटा कोट ऑफिस देखि छुगी कोन सोलटा कोन कहउचंदी तो एटा टाइगर रेंज कंट्रीज को कोटा इंक्लूड करछि देखि दंगे मोस्टली सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अछि ता साइड रे हम एशिया रे किछि कंट्री अछि इंडिया बांग्लादेश भूटान कैम्बोडिया चाइना इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार नेपाल रशिया थाईलैंड एटा मैप करके मन रख देबे इजी रहइबो हला ओके तापर हम देखिबा जो अवार्ड्स मिली छी 2022 फर्स्ट इनॉग्रल 2020 रे स्टार्ट हेतला और हमन को डेडलाइन केबे थिला 2022 सुधा 2022 सुधा तांको डबल करे छ ओके ता बाद इंडिया रे एटा खाली इंडिया को तो मिलुना ना बाकी कंट्रीज को भी मिलुची तो इंडिया रे एतिक जन को एतिक टाइगर रिजर्व को मिल सच ओके 2020 रे पिलभिट इन उत्तर प्रदेश ताको मिलची 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु and recently Pench and Satpura in Madhya Pradesh तांको भी अवार्ड है ओके एबे इंडिया रे टाइगर संख्या केते ही साइलेंट यस पिलभिट then Satyamangalam then Pench तक मन रख परिबे PSP and PSP हला
Jiba, next slide. Next question. It had a question, Thila. Cataract was recently seen in the news is related to. See, as I always say, कि सब बड़े देखिए कि question को हमें कैसे approach कर परिबा. Since cat mention है जी, should be knowing something related to maybe tiger such, right? it पचाची software used for the purpose of tiger census. सेमती आउथरे पढ़तिला जो say stripes. A type of disease originating from rats that can be transmitted. I think rats को लेके समझने का बोलने चाहिए. A method to dispose of the virulent genes during captive breeding, type of enzyme. So it is actually a software. Tiger census माने tiger को तो हमें गणु चंदी इतने particularly कितना अच्छा नहीं, right? तो सेट में आजकल AI use करके तो geo tagging करा जाऊ ची. सेट में इटा triple IT Delhi को software बने ची cataract. Okay? तो ना हला cataract. ये यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा है जी M stripes जेमती थिला आगरो इटा कौन है फुल फॉर्म होची कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल ये बनै छि जेमती कहली इटा ट्रिपल आईटी दिल्ली डेवलप करछि बट ता सहित इटा यूज के करछि ना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII फॉर जियो टैगिंग कोडिंग सेग्रीगेटिंग द इमेजेस माने टाइगर सेंसस पे यूज होछि ओके केतेटा नंबर ऑफ टाइगर्स अछंदी ताको जानिबा पई हमें ए सॉफ्टवेयर ता यूज करछ बेसिकली दिस इज अ सॉफ्टवेयर ओके Then the third question. ठीक है Management Effectiveness Evaluation MEE of National Park and Wildlife Sanctuary. এটা কোন না wildlife parks and national parks কেতে effectively কাম করছে তাঙ্গ conservation কেমতি চালিছি are they up to the standard are they doing what they should do মানে এই সব পাই জনে ম্যানেজমেন্ট অথরিটি রহিব রাইট তা না হলা MEE Management Effectiveness Evaluation তো সেটি সে পচারছি कि এটা রিলিজ কে করছে অফ ফলোইং অর্গানাইজেশন ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି এটা মিনিস্ট্রি অফ এনवायरनमेंट ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কହୁଛି बट आंसर आई थिंक दिया है এটা बट गूगल कले डिफरेंट वेबसाइट्स रे भी मेंशन है এটা MOEFCC तो आई थिंक यू गाइस शुड डबल चेक हला बट एटा ही एबे कि चाहिबे द गूगल कर परिबे ना ना माने ता अंडर ही तो के ओडे रिलीज करथुबो ना मे बी सीट पे से माने देखछबे कि ता अंडर मे बी इंस्टीट्यूट एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एटा से टेरी बदे नै कि TERI जोटा डेली अछि you guys can google and let me know your answer कौन होबो रिलीज के करछि कल जे हम देखबा ये कौन करे ये काम हला हां ना assessment करिवो हला दिस इज द कीवर्ड हियर assessment करिवो कि हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम केते भलरे रखुचंती ता कोन करचंती ता पई I think it was okay. कौन बैठा सेरा ना ठीक है ताले सेटा चेंज कर लेबे हला नोट्स ठीक है এটা ওটা ইম্পর্টেন্ট সেভ SAVE हाँ vultures it will be मन रखी होगा V for vultures right but the initiative टा important so we should look at that first देखो एटा कोन and केतेटा countries अछि सेटा important ता ना हला saving Asia's vultures from extinction सेट पे save program दिया छला V for vultures हमें मन रखि परिबा केतेटा countries देखो 1 2 3 5 6 countries Pakistan India नेपाल बांग्लादेश म्यांमार एंड कैम्बोडिया तो सबु जाक इंडियन सब कोने ना कैम्बोडिया को सब मन रखि रछि एटा कोन करा होछि ना कंजर्व करबे कैंपेनिंग करबे फंड रेजिंग करबे एबे हम वल्चर पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हे जाउछि बट द मेन रीजन फॉर दैट
डाइक्लोफेनाक वेरी गुड डाइक्लोफेनाक कौन पे हमें यूज करंती डाइक्लोफेनाक इज बेसिकली अ पेन किलर राइट और यूजुअली हम जो जति की वेट माने कोन करंती ना माने सांगे सांग कैटल हला माने सब से दे दियंती पेन किलर किछि भी दरकार हुए गाय ये सब को अब पेन किलर कार्कास को किए खाए वल्चर्स खांती दे आर डिकम्पोजर्स राइट खाइले से कोन करे डाइक्लोफेनाक तांकर रीनल फेलियर माने किडनी फेलियर करती है हला वल्चर्स माने डाइक्लोफेनाक कंज्यूम कला पर सेति पे से पूरा लोप पाई गला so we are trying to save the vultures आ गोटे मेन जिंस हला vulture population रो तो एतरे आ गोटे क्वेश्चन आस्थिला फर्स्ट हमें सेटा देखि दबा तापरे मु कहबे okay India is a member of saving Asia's vultures from extinction program and also a signatory to the convention on migratory species multi-species action plan to conserve African Eurasian vultures এটা রাইট স্টেটমেন্ট না ভুল Okay, use of diclofenac drug is one of the prominent causes for the declining populations of vultures. But the Indian government has allowed its use till 2018. यदि if it is such हाँ इतने यदि बड़ा जिनिस तो केबे भी allow करती होगी already ban ही सालानी for veterinary purpose इटा ban ही है but still आम मान को देखियो पेन किलर एबे भी दिया जाउची doctors recommend कर दियंती diclofenac but veterinary purpose रे एटारा discontinue करा है this is a wrong statement the 2 is wrong 2 is wrong 2 is wrong right so action plan for vulture conservation 2020 to 25 पंचवर्ष में it aimed to establish additional conservation breeding centers along with vulture conservation centers so pretty basic general statement so this has to be true हाँ जेमति कि मु तुमको मानको पचारथली कि vultures मानकर importance कोन गोटे ecological cycle या फिर हम बायोलॉजी रे vultures कर इंपोर्टेंस कर सेमन तो डिकम्पोजर्स गोटे हला सेमन डिजीज भी प्रिवेंट करंती प्रिवेंशन ऑफ डिजीज केमती तका स्टमक रे जो एसिड उडा का थाए सेटा सबु किछि मोस्ट ऑफ द वायरस बैक्टीरिया को डिग्रेड करि पारे तो सेटा सेमन कोन करंती काइंड ऑफ डिजीज प्रिवेंशन रे हेल्प करछन राइट एंड गोटे इंडिकेटर स्पीसीज भी से माने यदि vulture पॉपुलेशन अच्छी तो तमे जानिबो कि हां माने हेल्थ ऑफ एन इकोलॉजी सेठो हमें डिसाइड करि परिबो राइट ओके एटा हमें देखतिले एबे ओके जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सी आनी जोडे vulture एक्शन प्लान 2020 टू 25 भितरे एटा जैसे देखि पार्थबो लिखा है डाइक्लोफेनाक ऑलरेडी वेटनरी यूज 2006 रु समाने बैन करि साइलेंट प्लस एबे रिसेंटली समाने किछि एडिशनल ड्रग को भी बैन करछन कीटोप्रोफेन एक्लेलोप्रोफेनाक एक्लेलोफेनाक ओके सेटा को भी सब बैन करछन 2023 बहुत रिसेंटली समाने करछंती आउ एटा कोन करथला समानकर किडनी फेलियर करथला हैला आउ के प्रेजेंटली हमें केतेटा vulture रो स्पीसीज अछि देखि दियो एटा केतेटा टाइप 9 टाइप्स सेतिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड केतेटा चारटा देखो एटा गोटे ओरिएंटल व्हाइट बैक vulture स्लेंडर बिल्ड vulture एटा भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड vulture क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ हला एटा गोटे रेड हेडेड vulture क्रिटिकली माने तार नंबर्स पूरा अति काउंट फिंगर टिप्स रे रहला भला नंबर्स बहुत कमी गला तबे vulture कंजर्वेशन ऊपर बहुत चलछ तो एटा देखो vulture रो कंजर्वेशन तो गोटे एटा सेट करा छै ब्रीडिंग सेंटर कोठी ना पिंजर हरियाणा रे मते इंटरेस्टिंग लागला ए जिंसटा कि गोटे vulture रेस्टोरेंट आजिकली होची एटा कोदरमा डिस्ट्रिक्ट रे हिची झारखंड कोदरमा रे vulture रेस्टोरेंट ता माने कोन सेटा कोन हेती ओटी गेस करला vulture को खाइबा सेठी हम बसिकी माने सेठी एक्चुअली vulture मन को दिया होची से माने खाइबे बोली जहाँ भी से माने खांते वहा होची रेस्टोरेंट सो दैट माने गोटे अवेयरनेस क्रिएट करिया पे लोगों को बुझिला ना मास को अट्रैक्ट करिया पे बट vulture रेस्टोरेंट ना कोदरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड रे स्टार्ट हिची आउ तार ब्रीडिंग सेंटर कोठी सेट हिची बे हरियाणा ओके तो सेफ ता कहां पे हुए मूविंग ऑन ओके एटा ठीक इजी क्वेश्चन थिले समस्त करथे बोधे which among the following protected area sites has a unique distinction of being a national park wildlife sanctuary a world heritage site a biosphere reserve tiger reserve as well as elephant reserve कोडा हबो मानस मानस सबु जाक हला बायोस्फीयर रिजर्व भी टाइगर रिजर्व भी आसाम रे कोडा कोडा टाइगर रिजर्व तेरा ये ट्रिक था ना जो आर मॉन्क D1 D2
राइमोना, मानस, ओरांग, N is for N for कौन पहला नामेरी नामेरी वेरी गुड नामेरी काजीरंगा दिब्रु साइखोवा और लास्ट है कौन रिंग पटकाई कौन से ना लास्ट है रिंग पटकाई ସେଥିରୁ ଏଇ ମଙ୍କ୍ ଟା ହିଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଲା ମାନସ ଓରାଙ୍ଗ ନାମେରୀ କାଜିରଙ୍ଗା ରାଇମୋନା ରାଇମୋନା राइमोना मानस ओरांग नामेरी काजीरंगा दिब्रु साइखोवा रिंग पटकाई एतिकी टोटल अच्छे आसाम रे ସେଥିରୁ ମଙ୍କ୍ ଟା ହିଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ तो मानस इज अ टाइगर रिजर्व राइट एबे हमें जिबा देखिवा ओके मानस नेशनल पार्क मानस रे को रिवर फ्लो करे मानस रिवर बहुत इजी है ला आउ एडी मेन है ना कौन स्पीसीज मिले देख दबा कथा आउ एटा ना माने आसाम एटा एटा भूटान तो जेटा कंटिगियस अछि एटी जोटा हमर एटा मानस तांकर सेटा को रॉयल मानस कोचंत मानस रिवर रू ही या ना ओरिजिन हेची आ एतरे कोन मिले एटा सब इंपोर्टेंट आसाम रूफ टर्टल ए सब पचारे यूपीएससी यार माने आईयूसीएन स्टेटस कोन जोटा सब न्यूज रे कि जहा भी आछे ना तार एडी आईयूसीएन स्टेटस लिखि दोतो स्पीड हेयर गोल्डन लंगूर पिग्मी हॉग एटा बहुत ही छोटो है राइट गोटे पिग वाइल्ड वाटर बफेलो ओके मूविंग ऑन एबा देखिबा हमें हाँ जमते मु सताले कहउतले ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव हमें पढ़िथिले राइट पढ़ला बेल को ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव से कहउछ कि के इनिशिएट करिछ आई थिंक एटा वर्ल्ड बैंक ग्लोबल टाइगर इन से जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यार एक्चुअली से जो ट्रस्टी था वर्ल्ड बैंक हला ये गोटे फाइनेंशियल मैकेनिज्म माने ये कौन करे ना फाइनेंस प्रोवाइड करे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी टा ये पैसा दबो तो यार ट्रस्टी हला वर्ल्ड बैंक राइट तो सेत पे से माने पचास तो आंसर रे वर्ल्ड बैंक हबो ता सहित भी ए इंस्टीट्यूट सब अछि स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट सेव द टाइगर फंड इंटरनेशनल टाइगर कोलिशन से मन करो गोटे इनिशिएटिव हला ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव अगेन से समान कथा 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जो हम फर्स्ट देखते 13 टाइगर रेंज कंट्रीज सेतरे कोन रोज ना समान कर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी समस्त मिसी कि टाइगर को हमें केमति कंजर्व कर काहे कि टाइगर को कंजर्व करिया पे समस्त एते लागि पड़छंती व्हाई बिकॉज़ सब प्रकार स्पीसीज है फ्लैगशिप स्पीसीज अम्ब्रेला स्पीसीज राइट ताकू यदि हमें सेफ करछन ना इकोलॉजी रो हेल्थ से डिटरमाइन होउची गोटे टॉप पिरामिड रे टाइगर बसिची माने बाकी समस्त भी सुस्थ अछन तत्वा से एग्जिस्ट करछ बिकॉज़ से समान को खाउची राइट सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट ओके एटी देखो लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर रे आउ एटा हला आजिकल एमती यूपीएससी सब क्वेश्चन पचारची कि तांका टेरिटरी रे एटी एमती लिखा है ना कि गोटे मेल रो टेरिटरी रे अराउंड 2 to 7 फीमेल आसीजो माने बड़ था तांका अराउंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ बड़ एरिया तांकर गोटे जो मार्क करछ मन तो टेरिटरी मार्किंग करंती ना कि एतिकी एरिया गोटे टाइगर समान सेमती हिसाब रे वाइल्ड एनिमल्स बोलंती मन ता एरिया रे आउ की आसी परिबो आउ जो स्ट्राइप्स थाय ना तांको बॉडी रे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भला माने यूनिक सेटा हला आउ टाइगर्स बहुत भला स्विम भी करंती देखि छ ना ए नंदन कानन के पानी रे बुडी की था स्विम तो करिया म देखिनी ओके और से मिलानेस्टिक टाइगर भी इंपोर्टेंट जोटा ओडिसा रे ही मिलुची केबल राइट चिमली पार रे ओके टाइगर्स गोटे फ्लैगशिप स्पीसीज भी अम्ब्रेला स्पीसीज माने कोन तांको तो तुम सेव करछो तांको अंडर रे बहुत सारा एनिमल सेव हे जिवे राइट आउ हला फ्लैगशिप माने कोन दे रिप्रेजेंट द इकोसिस्टम दे रिप्रेजेंट द बायोडायवर्सिटी माने सोटे फ्लैगशिप ता को देखिले तुम जानि परिबो कि एक आउ कोन स्पीसीज अछि अवेलेबल इन ऑल ठीक अछि एटा एठी लिखा है देखो
तुम जानछो तो ऑलरेडी कि एटा हला ଗୋଟେ endangered species हला IUCN status हला endangered एटा important कि largest tiger population को state रे अछि highest tiger reserve सेठी अछि तो जानिया कथा MP followed by कर्नाटका और density टा कोठी अधिका ना इट्स लिखा है highest tiger abundance बट गोटे क्वेश्चन आस्थिला कि टाइगर रो आई थिंक कोर डेंसिटी रे बेसी पॉपुलेशन कोठी तार आंसर बोधे कोन हबो कि सत्यमंगलम हबो कि कोन हबो ता आंसर जिम कॉर्बेट नु बोधे हां सेटा तो फर्स्ट ला सेटा ना सत्यमंगलम सेटा मु देखि कि नेक्स्ट टाइम कहबी ओके एठी गोटे क्वेश्चन आछे एटा कल्ला देखिबा ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स हमें डिस्कस कर साइलेनी कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड कैट्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल्स माने गोटे काइंड ऑफ एमाने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करंती कि टाइगर कंजर्वेशन केमती हबा कथा एमान कर जंती बेंचमार्क that set the best practices and standards to manage tigers and assessment to benchmark progress only for tiger. India is home to about 70% of the global tiger population, wherein Uttar Pradesh has the maximum number of tigers. Okay? Every here we देखिए, right? So 2 is wrong, 2 is wrong. Tigers are both a flagship species and an umbrella species. Is that correct? So এটা answer 3 হবো 1 why is 1 wrong only for the tiger हला କଥା cats से आउ के आछंती lion हां cats माने obviously से cat family को belong करथुवा सेति पई रखा है राइट फिर अब देखिबा हमें cats विषय रेबे ता ना हो जे cats कोन पे कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स माने टाइगर स्टैंडर्ड्स में हम जानि पड़तने से माने से कहतने कि स्टैंडर्ड्स कोन रहबा कथा टाइगर कंजर्वेशन पे राइट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ओके हैज बीन अग्रीड अपॉन एज एन एक्रेडिटेशन टूल जेमति तम कॉलेज मान को जो रेटिंग मिले नैक दिए ना सेटा कॉलेज रो ए बी द रेटिंग मिले से भला बट एक्रेडिटेशन टूल एटा तो रिसेंटली सेतरे ना किछटा हमरो सेतरे इंडिया रे केते अछन कहि परिबो टाइगर रिजर्व कैट्स रे केते ऑप्शन द टाइगर रेंज कंट्रीज एटा लिखाई छी सबु देखो एटा था इंडिया रे 14 टाइगर रिजर्व होछन एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो हला कि कैट्स रे इंडिया रे 14 टा कंट्रीज आसुचन ओके मानस काजीरंगा ओरांग इन आसाम खाली से के टा नाही MONK एन टा नाही बाकी सबुडा अछन तापरे हला सतपुरा कान्हा पन्ना इन मध्य प्रदेश पेंच महाराष्ट्र वाल्मीकि बिहार दुधवा यूपी सुंदरबन वेस्ट बंगाल परम्बिकुलम केरला पुर कर्नाटका मुदुमलाई अन्नमलाई इन तमिलनाडु तो इंडिया रो कैट्स से के जण ऑप्शन माने कैट्स रो स्टैंडर्ड्स को फिट करथवा से एक्रेडिट कर देछि केतेटा टाइगर रिजर्व 14 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया ओके आ हला एटा भी मन रखि परिबो कि देखो जो कैट्स रो जी माने असेसमेंट इंडिया रे सेटा के करछि इंप्लीमेंटिंग पार्टनर जो एनटीसीए रो एथन अछन ग्लोबल टाइगर फोरम गोटे से हला गोटे इंटरनेशनल एनजीओ हला एंड वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडिया आर द टू इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स ऑफ एनटीसीए फॉर कैट असेसमेंट माने कैट रो असेसमेंट करे पे एनटीसीए करछि तो तार पार्टनर्स के माने सब पार्टनर्स अछन ओके ओडिसा के भी नाच ओके एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है सब जानथि वो प्रोजेक्ट रिहैब विषय रे से मोहु माछी देके माने माने एलिफेंट माने को जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होनी सेटा को रोकिया को चेष्टा करछन प्रोजेक्ट रिहैब इज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स जो एलिफेंट माने पळे आछंती ह्यूमन हैबिटेशन को तो से माने को बाडे की तांग भितर युद्ध होची जा बी ये मरुची सी मरुची सेति पई गोटे इनोवेटिव कोन कहते ना बी तो माने बी मोहुमाछी को छाडी दोजनी एलिफेंट्स मान को बहुत डर थाए कि तांग बी स्टिंग हे जीवो तांग जो ट्रंक रे नै से को डर की से दौड़ी की पळा सच माने छोटा जिंस किंतु केते भलो जिंस ओके प्रोजेक्ट रिहैब इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग bees correct highest population of elephant is found in Kerala
followed by Assam and Karnataka. But Kerala रे तो सब temple रे elephant थांती, but still Karnataka, right? Tusks are present in the female Asian elephants and absent in the female African. In Asian elephants रो ही नथा है डांता, right? Asian elephants form herds of related female that are led by the oldest female, the matriarch. एटा ଗୋଟେ UPSC रे question भी आस्तिला कि leader सबले herd के तो female हेता है. Women empowerment. तो यार आंसर कौन होगा? 2 is wrong. 2 wrong, 2 wrong. 1 and 4. एटा भी wrong. Yes. Okay. Rehab देखो इतरे कौन लिखा है project rehab हला reducing elephant human attacks using bee हला ସେମାନେ bee fences बनाउचंती bee box रखि दउचंती तो elephant असले सेटा खोली दउचंती तो ସେମାନେ पळौचंती हला the boxes are connected with a string so that when elephant attempt to pass through a tug or pull causes the bee to swarm the elephant herd dissuade the cost effective way और बहुत ही innovative way हला एटा कोठी हेतला देखो फर्स्ट माने कोठी आनथिले कर्नाटका रे आनथिले तापर एटा को माने आसाम रे भी रेप्लिकेट कराउ चेष्टा करछ was launched on 15th March 2021 and 11 location in Kodagu district Karnataka बा एटा just 6 months रे ही elephant attacks को 70% कमे देला कर्नाटका रे आस्तिला एबे से माने आसाम रे भी तेटा को रेप्लिकेट करछन so this is an interesting table एटा हला important कि कंपेयर करबा हमें अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट को देखो अफ्रीकन एलिफेंट के बड़ा साइज था तांकर हां और एशियन एलिफेंट के साइज छोटा था देखि पड़तो बोले बड़ा हो नहीं ओ एटा है लार्जर 8000 केजी बाप रे ए माने ଟିକେ छोटा था देखो और इनका कान कितने बड़ा तो कान एमती था Okay, ears, large fan-shaped ears, smaller rounded ears. आओ देखो यार ना इनके double dome head था यार single था माने इनके उड़े सिंतानी में था यार इट लिखा है twin dome head, single dome head. यार skin is more wrinkled, ये ना smooth skin. Aging नहीं, है एटा है important. एटा ही question ले आस्ते कि both male and female African elephant grow tusks. Larger than Asian elephant, only some male Asian elephants have tusks. खाली माने मेल रही बहुत सेटा पे समस्त न था किछि जन करी टस्क आउ हला बाकी एमानकर एज भी देखो ये 70 इयर्स जाय बंचुची ये मात्र 50 भी होनी आउ एटा इंपोर्टेंट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये हला एंडेंजर्ड माने जत्ते की भी हमर इंपोर्टेंट एनिमल्स अछन ना टाइगर एलिफेंट ये समस्त एंडेंजर्ड हला मन रखो नोबडी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड good enough numbers अच्छे हो बाकरे तो ये है ला larger ears बड़ा है ला आओ both male female रा tusk है आओ कौन आओ single domed head आओ ये है ला critically endangered आरटा endangered माने African elephant टा खतरनाक स्थिति रे दच ओके ओके moving on okay एटा जो आस्तिला यूपीएससी क्वेश्चन है सेटा मु किछटा एडिशनल ऐड कर देछि सेति पछतला कि तम जेस्टेशनल पीरियड माने जे छुआ जन्म करिवार जति के दिन थाए सेटा हाईएस्ट गोटे मैमल हला एलिफेंट अराउंड 680 डेज आ गोटे फीमेल ना 14 to 45 इयर्स भितरे अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 इयर्स छुआ दे परिबो एटा भी पछतला सेतरे ओके आ एलिफेंट हर्ड को सब बेले के लीड करे गोटे फीमेल मैट्रियार्क कहा जाता मैट्रियार्क सेटू में हाईएस्ट एटा को काक भली मन रख परिबो बट के फर्स्ट के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका एटा स्टैंड्स फॉर केरला फर्स्ट सबुठो अधिका कहा पकरे अछि कर्नाटका देन कम्स असम देन कम्स केरला एलिफेंट रिजर्व्स रेट दिया है छी मन रखिबो समस्ते एलिफेंट रिजर्व ओडिसा रे केतेटा अछि मयूरभंज गोटे संबलपुर और महानदी ओके टाइगर कोडी हाईएस्ट अछंदी आ एटा एलिफेंट ओके
एटा तो ऑलरेडी हमें कर साइलेनी बोधे बायोस्फीयर रिजर्व ओके Biosphere reserve. Consider the following statements regarding a biosphere reserve. Biosphere reserves are sites established by countries and recognized under UNEP's Man and Biosphere Program. UNEP रो ना कहा रो UNESCO रो. Very good. तो एटा wrong statement है गला. देखो one को इतना में काटे तो दीटा statement पढ़ो. The Nilgiri Biosphere Reserve in the Nilgiri Mountains of Western Ghats spread across the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश हबो कौन हबो तमिलनाडु कर्नाटक एंड केरला द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इन द रेंज ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूड्स 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट बोरी सेंचुरी पंचमरी सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क एटी बहुत भितर पचाचे एटा बिंध्यन हबो एटा सतपुरा हबो हला पंचमरी टा सतपुरा रे जाउछ एमती रे जदि हम देखि थांते जणा पड़ी होछ 2 इज राइट तो 2 हेई थांता एटा हला anyway ओटा इनकरेक्ट पचारछ ओके ओके ओटा कोटा इनकरेक्ट पचारछ इनकरेक्ट तो एटा रॉन्ग दिहांग दिबांग is a biosphere reserve in Assam that covers high mount एटा कोट मिस एतना मु कहतिली DMAM ताको मने अछि डाफला मेरी अबोर मिश्मी एटा कोठी अछि नागालैंड अरुणाचल प्रदेश तो ऑल आर रॉन्ग हला सब जगह रॉन्ग स्टेटमेंट काहे कि रॉन्ग बिकॉज़ एटा हला यूएनईपी रे नो एटा यूनेस्को रो ओके एटा कोठी कोठी तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला पंचमरी इज इन द सतपुरा रेंज दिहांग दिबांग करेक्ट वेरी गुड ओके बायोस्फीयर रिजर्व रे ना एटा इंपोर्टेंट ए मैप इज वेरी इंपोर्टेंट टोटल केतेटा बायोस्फीयर रिजर्व अछि इंडिया रो 18टा सेतिरु 12टा ही यूनेस्को रो जो मैन एंड वाइल्ड बायोस्फीयर जब एमएबी प्रोग्राम जोटा था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम रे ओनली 12 अछि त ट्रिक हला कि सब एक्सट्रीम गुडा को काटी दबो हला देखो यार ऊपर हला कोल्ड डेजर्ट नाही एडी दिहांग दिबांग नाही एडी शेषाचलम नाही काइंड ऑफ एटा एक्सट्रीम नो है बट माने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ग्रेट रन ऑफ कच्छ नाही ता सहित पन्ना नाही हला औडे मानस ए दिटा को मिसे की काटी दियो कि आसाम रो के भी नांती तो सेमती मन रखी परिबो दिब्रु साइकोबाटा कोठी आउस एक्चुअली दिब्रु साइकोबाटा आसाम ना पूरा ऑलमोस्ट बॉर्डर हे जाउची देखो एटा बायोस्फीयर रिजर्व माने तो हां मिसी के आउस तो काइंड ऑफ अ ट्रिप मन रख परिबो किमदी चारटा जागरु चारटा काटी दबार छी ग्रेट रन ऑफ कच्छ ऊपर कोल्ड डेजर्ट को काटी दबो मझिरे पन्ना को काटी दबो तळे शेषाचलम बट मानस आउ दिहांग हम सिमलीपाल टा भी गोटे बायोस्फीयर रिजर्व हला बाकी तक केते अछि नंदा देवी कांचनजंगा मानस दिहांग दिबांग दिब्रु साइकोबा नोक्रेक टा कोठी अछि मेघालय यस सुंदरबन सिमलीपाल अचानक मार अमरकंटक टा कोठी अछि छत्तीसगढ़ पन्ना पंचमरी ग्रेट रन ऑफ कच्छ नीलगिरी अगस्त्यमलाई शेष देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट सब बले मन रख एथि बहुत क्वेश्चंस आसे कि नीलगिरी और अगस्त्यमलाई टा पूरा तळे पूरा टिप ऑफ साउथ इंडिया रे अछि नीलगिरी टा ऊपर अछि से माने बहुत थर कंफ्यूज करंती कि नीलगिरी को तळे देखि पचेट गोटे माउंटेन सहित तो नीलगिरी नॉर्थ रे अछि एंड फॉर नॉर्थ एंड फॉर नीलगिरी अगस्त्यमलाई पूरा तळे अछि हला Puni Tiger, Project Tiger. Project Tiger has been converted into a non-statutory authority, National Tiger Conservation Authority (NTCA) by providing enabling provisions in Wildlife Protection Act. It is non-statutory ना statutory. भूल लिखा है इच. यदि Wildlife Protection Act दिया है जितना माने सेटा उड़े statutory body, right? Okay. India is a part of CATS. अभी हमें देखिले, right? CATS under कितने tiger reserve है जानती? 14 tiger reserves. Tiger standard, which is globally accepted conservation tool agreed by the global coalition of tiger range countries. कितने tiger range countries? 13 tiger range countries. India hosted the International Tiger Youth Summit. ये एक factual question अच्छी. यदि हमें 1 को काटू चंती, ताले दीटा statement बोलूँ चाहिए हमारे. Either 2 or 3 or 3. Maximize करिया करता तो 2 and 3 रह जीवो. तो ये correct.
इंडिया पोस्ट करतला 2000 जदि इंडिया पाखरे ही अछि 70% पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली इंडिया इज द राइट पर्सन राइट ओके ग्लोबल टाइगर समिट विषय लिखा है तार सब थीम पढ़ी दबो हला सेटा मु बदे मिस कर दी लिखिबा सेटा सेटा इंपोर्टेंट ए सब रे थीम देखि देथिबो हला फर्स्ट आस्तेला मु कहथि ना 2010 रशिया रे 2029 जुलाई सेटमेंट टाइगर डे मनौचंती राइट तो तार परे एबे हेइचे 2022 रे इंडिया रे हेइचे तले रशिया रे हेतला हला फर्स्ट ग्लोबल टाइगर समिट वाज हेल्ड इन रशिया इन 2010 ओके एबे हेइचे तापरे 2022 रे कौन पाई होती ना मूवमेंट ऑफ ग्लोबल एडवोकेसी फॉर टाइगर लीडिंग टू इवेंचुअल राइज इन टाइगर पॉपुलेशन और एटा एक्चुअली काम भी करूछ टाइगर पॉपुलेशन बढ़ुछ सो दैट्स अ गुड थिंग ओके एटा देखिबा एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलराइट हमर केतेका प्रकार ओजोन थाए देयर इज अ गुड ओजोन और अ बैड ओजोन राइट देखो एटा जदि हमर अर्थ ता ऊपर एटमॉस्फेयर लेयर मते कहलो दिस इज ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर एंड दिस इज थर्मोस्फियर तो जोटा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन सेटा हला गुड ओजोन बिकॉज़ से कोन करे यूवी रेज रो हमको प्रोटेक्ट करे हार्मफुल यूवी रेज यूवी रो भी कैटेगरीज थाए ए बी सी मोस्टली से बी और सी को पूरा ही ये कर दिए तो एटा हला गुड ओजोन हला एटी जोटा अच्छी सेटा हला गुड ओजोन बिकॉज़ से यूवी रेज रो हमको प्रोटेक्ट करे यूवी रेज कोन बहुत हार्मफुल स्किन कैंसर कराए बहुत ही माने डीएनए को चेंज कर परिबो माने एते हार्मफुल सेटा तो सेथिरे हमको ओजोन बंचे होची तो दैट इज अ गुड ओजोन बट एटा हमें अर्थ रेट रहू जानती तो हम ओजोन टा भी एते भलो गैस नो इट्स आल्सो ग्रीन हाउस पॉल्यूटेंट राइट तो बहुत अनस्टेबल भी बिकॉज़ ऑक्सीजन हमें जानछि कोन O2 है कि था एटा O3 माने कोन गोटे एम्प्टी बॉन्ड थिबो तार देखो तो ए जो बॉन्ड एंड रेजोनेंस रे बोलुथबो हला तो बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल तो एटा तळे रहिले कोन हम आई इचिंग करैबो तपरे माने हम फोटोकेमिकल स्मोक थाए जानछ ना जो सनलाइट प्रेजेंस से जो स्मोक टा है जे तो फोटोकेमिकल स्मोक हो जाए तार मेन कल्प्रिट हला ओजोन तो ओजोन इन दी एटी ट्रोपोस्फियर इज नॉट अ गुड ओजोन सेटा बैड ओजोन ओके सो सेति पई बट हमें देखिया को पाइलो कोन ओजोन लेयर थिनिंग होतला कोठी मोस्टली थिनिंग होची अंटार्कटिका रे थिनिंग होची काहे कि अंटार्कटिका रे थिनिंग होची बिकॉज़ ऑफ अ कांसेप्ट कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हला गोटे जिंस थे पोलर वॉर्टेक्स तो माने पढिथिबो बोधे देखो पोलर माने कोन इट इज रिलेटेड टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमें जानछन राइट एंड वॉर्टेक्स माने कोन गोटे विंड सिस्टम को हमें वॉर्टेक्स कहउछन फॉर एग्जांपल एटा जदी हमर अर्थ तार पूरा पोल रे कोन होची ना नॉर्थ जो पूरा पोलर रीजन रे कोल्ड एयर हला हेवी एयर कोन करे सब सिंक करिया को चेष्टा करिवो राइट जो एयर थिबो या ऊपर सब सिंक करिया को चेष्टा करिवो बिकॉज़ एटा बहुत हेवी थाए जोटा हॉट एयर कोन ऊपर को जिवो आ वार्म एयर आ लाइट थाए आ हेवी एयर सिंक करिवो यदि एथि की एयर का सिंक कला तो डेफिनेटली ए जगह रे एयर कोन हे जिवो लो प्रेशर हे जिवो राइट एटा लो प्रेशर वैक्यूम भला क्रिएट हेबो वंस गोटे जगह लो प्रेशर क्रिएट हला ना साइड जति की एयर के सब रश करिवो सेति तो गोटे साइक्लोनिक मूवमेंट भला क्रिएट हे जिवो ओके तो सेटा रे ना बिकॉज़ ऑफ कोरिलिस फोर्स सेटा बुलिया को लागिवो माने एमती टिल्ट हे जिवे सब तो एटा गोटे जो क्लाउड सेटा को हमें वॉर्टेक्स कहते गोटे विंड रो मूवमेंट हेबा को लागुची तो सेटा पोलर रीजन रे जेतु होची सेटा को जाउची पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ओके सेटा को पोलर वॉर्टेक्स को जाउची वॉर्टेक्स माने विंड रो मूवमेंट पोलर रीजन रे होची व्हाई बिकॉज़ इट्स गोटे हाई प्रेशर जति कोल्ड एयर सिंक करूची ऊपर लो प्रेशर एयर रे गोटे साइक्लोनिक मूवमेंट हे जाउची राइट तो ए जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इज वेरी मच रेस्पोंसिबल फॉर योर ओजोन डिप्लीशन जोटा कि मोस्टली हमर अंटार्कटिका रे होची काहे कि होची पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड तार गोटे अच्छी ये देखो मु देखौची फर्स्ट सेटा देखिबा तार क्वेश्चन को कर ओके ओके तो एटा देखो एटा तो ग्राउंड लेवल ओजोन विषय लिखा है दिस वन जदि हमर जदि नथांता विदाउट द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड न हेले कोन होची ना एनीवे हमर एक्टिंग जो Cl मॉलिक्यूल्स हम जो मना करा होची सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करा को है बिकॉज़ Cl टा अति रिएक्टिव फ्री रेडिकल है कि से O3 को भांगी दबो हला ओजोन को सब भांगी दियो O2 कर दिए और O रेडिकल काढी दबो तो सेति पे हमें सब बैन करछन ना जो जति कि CFCs हला हम जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होची बट इन केस जदि एटा नाही ना Cl तो मिसे कि एना ଗୋଟେ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करछन जोटा कि
या पर से किसी करबोनी इनएक्टिव हे जाउची से कॉम्प्लेक्स ता जहां भी से बनेला एक्टिव फ्लोरिक मॉलिक्यूल सहित जते इन एब्सेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इटा उडे कॉम्प्लेक्स बनेला बट इन केस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो क्लाउड यदि थिबो पोलर वर्टेक्स फॉर्म हैला ठंडा जगह रे यदि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड अछि ततरे ना बहुत सारा HNO3 मॉलिक्यूल थाए माने नाइट्रिक एसिड थाए नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस देखो से मैंने कोन कहतनी फर्दर एटा को भी भांगी चलीबे माने सेठु भी Cl डॉट बाहरथो से पुनी ओजोन को अटैक करथो सेठु पुनी ऑक्सीजन रेडिकल बाहरथो माने इट विल माने चेन रिएक्शन भेला इट विल कीप ऑन राइट तो सर एग्रावेट कर दबो से सिचुएशन एठी जहां हेले भी जदी एठी 70% बेले होतला एटा एठी 100% हे जिवो हां सर प्लीज तो सेति पई जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड काहे कि हमर होची बेसी अंटार्कटिका रे बिकॉज़ ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ओके एब्सेंस रे भी होची बट इन प्रेजेंस रे बेसी एग्रावेट कर दोची माने जंती गियर डालंत रे नियर एसी टाइप रो काम करछ हला तो मोटा मोटी कथा हला गुड ओजोन कोठी अछि हमर स्ट्रेटोस्फियर रे बैड ओजोन कोठी अछि ट्रोपोस्फियर रे ओके आउ तापरे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कोठी बेसी फॉर्म होची बिकॉज़ ऑफ अंटार्कटिका रे काहे लैंड बेसी नाही बेसी ठंडा यार मेन क्राइटेरिया हला ठंडा बे जते ठंडा थिबो से -80 डिग्री सेल्सियस भला रे से फॉर्म हे जिवो हला और ग्राउंड लेवल ओजोन कोन पे खराब बिकॉज़ ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग देखो एठी मु कहि दोची फोटोकेमिकल स्मॉग केमति प्रोड्यूस होता है ना जो हम जो वेहिकुलर पोल्यूशन जति के माने वेहिकुलर एमिशन जति के अछि व्हीकल्स मन को जोडा में बाहर नाइट्रोजन कंपाउंड ई सब बाहर ना NOx जोडा को में कहउछु ते कोन करबो ना जति कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर अछंती जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल माने कोन जोडा इजीली वेपराइज हे जाउथबो हाइड्रोकार्बन्स रे माने कोन हाइड्रोजन और कार्बन थिबो सेठी राइट तो जते इजीली वेपराइज हे जाउथबो ता से तो मिसी कि जो ओजोन बने कि ग्राउंड लेवल ओजोन सेटा ओडे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वाला काम करे हला तो ये स्मॉग क्रिएट करे जो देखछ ना एटा सनलाइट प्रेजेंस रे हुए पे ओडे सिटीज रे दिन बेला माने विजिबिलिटी बहुत कमी जीवो हला आउ तापर एटा सब तमरो जते कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम ए सब भी करे पारे तो ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट गुड हला ओके इट देखो क्वेश्चन में पचरछि ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर इज गुड कोडी बडो ओके तो एटा हला रॉन्ग ओके so जहां पर lecture by absorbing some of the sun's harmful UV unlike other chemical chlorofluorocarbon cannot be eliminated from atmosphere by the usual scavenging process like photo dissociation out in oxidation okay let's hold on third है ना there exists a correlation between cycle of ozone depletion and presence of polar stratospheric cloud correct मैं भी कहली right अंटार्कटिका रे सही होची तो वन को यदि हमें काट दबा एनीवे मैं हमको पक्कू आसी गलानी बट स्टिल एथे से कोन कोची कि unlike other chemicals CFC cannot be eliminated by ए सब जिंस से सत्य कथा माने कंप्लीट एलिमिनेशन केबे भी हे परिबोनी फोटो डिसोसिएशन माने कोन लाइट प्रेजेंस से जो डिसोसिएट होची रेन आउट माने वर्षा रे धोई जिबा न ऑल दैट तो किछि परिमाण रे तो रहि जिवो आंसर हबो यार ओके ओके एटा हम देखले पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड तुम भाई रीडिंग फॉर्डर तुम सब यू गो थ्रू हला ओके एटा देखिबा the thickness and thinning of the ozone layer are uniform all over the earth no एबे ही मु कहली कि कोठी बेसी थिनिंग होची अंटार्कटिका रे राइट जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हमें कहउछ so this is wrong हेलो एनीवे हम कखु रिजल्ट आसी अछि इनकरेक्ट पछे ओके हाउ तबरे ओजोन इज प्रेजेंट ओनली इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्राउंड रे भी अछि ना एटा कि बैड ओजोन so this is also wrong the Kyoto protocol is seen as a landmark environmental agreement that aims to regulate the production and consumption Kyoto protocol कहा पे आछिला greenhouse emission very good देखो या ओजोन पे कोन आछि ना ओजोन पे तीनटे जिंस आसीबो गोटे हला गोटे फर्स्ट आसीबो कोन वियना कन्वेंशन हला सेटा केबे आसीते 85 Vienna convention माने countries will come together to discuss an idea माने it's like a setting a goal माने तमे डिसाइड करलो कि मो OPSC देबी से टाइप रा एटा हला कन्वेंशन तापर आसीला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एटा केबे आसीला 1987 एटा हला टारगेट्स तापर तमे डिसाइड करबो मो ए कोचिंग जॉइन करबी या पे मो OPSC पे या करबी राइट एतरे से माने गोल रो केमते हम गोल को अचीव करबा से विषय रे भाबीबे सो दीस आर लाइक टारगेट्स ओके
मॉन्ट्रियल वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तापर आसीबो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रे से माने कथा बे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस माने को जिंस ओजोन को पूरा डिप्लीट कर दोची तो दैट वी शुड फेज आउट हमें फेज आउट करबा बट इन अ सिस्टमैटिक वे माने एका थरे काढी देबानी फेज बाय फेज माने काढीबे तो सेथरे ना माने डिसाइड करंती कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मेनली ए माने ही रेस्पोंसिबल ओजोन डिप्लीशन पाई तो ताकू हमें काढीबा राइट तापर रिसेंटली गोटे आछि किगाली अमेंडमेंट सेथरे से माने कहउचंती कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी एलिमिनेट करबा ओके एथरे से माने कहिबे कोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किगाली रे से माने कथा हेबे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स विषय ओके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एज सच दे डू नॉट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन बट एमानकर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई ओके तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रे जदियो सेटा कम बट जेहेतु ग्रीन हम माने बहुत जल्दी गरम करी कि तम एनीवे टेंपरेचर बढ़े दउची ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करूची नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज करूची से माने किगाली अमेंडमेंट सेटा कथा हेबे कि हमें एचएफसीएस को भी एलिमिनेट करबा तो एबे देयर समथिंग एबे कोन ताले यूज करी हबो olefins hydrofluoro olefins I think you check it hydrofluoro olefins को समाने कहतनी कि एटा को यूज करी हबा बिकॉज़ यार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी लो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल भी लो हला तो फर्स्ट आसला वियना कन्वेंशन 1985 जोतरे कोन हला कंट्रीज माने दे गॉट टुगेदर टू डिस्कस अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन तापरे कोन आसला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल इन कनाडा समाने कोन कहले सेठी कि हमें अबे केमती अचीव करबा तो सीएफसीएस को हमें फेज आउट कर दबा ओके तापरे कोन आसला किगाली अमेंडमेंट किगाली रवांडा रे अछि सेठी कोन कहले कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी एलिमिनेट करबा बिकॉज़ दो दे डू नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन बट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर ग्लोबल वार्मिंग हला बुझी हला ओके तो एटी से पचाउ छ क्योटो प्रोटोकॉल तो क्योटो प्रोटोकॉल नो है क्योटो प्रोटोकॉल नो है एटा कौन हेता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेता हला दिस इज रॉन्ग तो कौन अब इनकरेक्ट ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट करेक्ट मूविंग ऑन ओके इट सब मेंशन है जे तमे माने सब देखि थाबो केमती पोलर वॉर्टेक्स रे होची एटा सब मु लिखि देछि ओजोन लेयर डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ए सब विषय पे लिखाइ छै ओके ठीक अछि क्लाइमेट फाइनेंस ऊपर भी आजिकली बहुत क्वेश्चन आसुची माने जो क्लाइमेट चेंज को डील करा पे पैसा हमें केमती आनिबा राइट ता पे गोटे फंड अछि ग्रीन क्लाइमेट फंड से कोन करे मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज लीस्ट डेवलप कंट्रीज ए मन को ही पैसा दियाला क्लाइमेट चेंज पे तो एटा किंतु क्योटो प्रोटोकॉल अंडर हि नथला क्योटो प्रोटोकॉल हमरो यूएनएफसीसी रो को कप को कहंती कहलो कप 3 को कहंती कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो थाई नी UNFCCC क्रिएट हेतला के 1992 अर्थ समिट रे तीनटा कन्वेंशन आस्तिला UNFCCC UNCCD UNCBD CBD टा कोन बायोडायवर्सिटी UNFCCC टा कोन हां टू कम्बैट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और CCD कोन डेजर्टिफिकेशन कम्बैट ए तीनटा तक कन्वेंशन कोड हेतला अर्थ सबमिट तक हुआ है राइट रियो अर्थ सबमिट 1992 ओके UNCBD UNFCCC UNCCD ओके तो यार जो कप प्रति वर्ष हुए मन को कप उडा एनुअल एबे जो 29 गला बाकू इन अजरबैजान तार जो कप 3 थिला ताको हमें कहउछनी कोन क्योटो प्रोटोकॉल है सो एटा भूल स्टेटमेंट आले तो 2 इज रॉन्ग करेक्ट 1 and 3 GCF is mandated to invest 50% of its resources to mitigation 50% adaptation mitigation और adaptation के डिफरेंस कौन हां adaptation माने ऑलरेडी हे सच्ची हमें ताको तो अडॉप्ट केमति करबा राइट इट्स लाइक प्रिवेंशन एंड क्योर क्योर माने कोन ऑलरेडी हे सेल डिजीज हमें ताको हबे ठीक केमति करबा आ प्रिवेंशन माने कोन पूर्वरु हमें केमति डिजीज टाको करेबाने से टाइप रो कांसेप्ट तो मिटिगेशन माने हमें मिटिगेट करौ चेष्टा करिया एडाप्टेशन माने तातो तो अडॉप्ट करबा ओके तो ग्रीन क्लाइमेट फंड कहां अंडर हेतला ताले
देखता बाने ओके एटा देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉप 16 रे हेतला हला से कोच कॉप 16 कैंकम रे हेतला कैंकम 2016 यूएनएफ ट्रिपल सी रो हेटा आउ हला द सेक्रेटेरिएट एठी अछि लिखा साउथ कोरिया रे अछि ये मोस्टली कहा को फंड दिए ना डेवलपिंग कंट्रीज एंड वल्नरेबल सोसाइटीज को दिया माने जो माने डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज ताको ही पैसा दी हला ग्रीन क्लाइमेट फंड ओके एडी पोल पचाची द क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज to reduce emissions while the Paris agreement called on all countries Kyoto protocol जो आस्थिला सेतरे जो ग्रीन हाउस गैस विषय में कथा हेले actually से माने they divided the countries into 3 categories annex 1 countries हला तापरे annex 2 countries रिया तापरे हला non annex countries India is a part of non annex countries हला एटी इंडिया अछि annex 1 माने developed annex 2 माने intermediate economies in transition थर्ड वीडियो ऑन है गई ओ तो सेतरे से माने कहले ए माने पूरा पूरी बंद करिवे जति भी हमर जहा भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पई जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को ए माने को पई बाइंडिंग टारगेट्स आनले एनको पई नॉन बाइंडिंग तो इन अ फेज्ड मैनर ओके तो से कोची कि रिक्वायर्ड ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन करेक्ट खाली से मैंने कहते कि नेक्स्ट 1 कंट्रीज ए मान को ही कहते कि तुम माने एलिमिनेट करो व्हाइल पेरिस एग्रीमेंट से माने कोन कहले से माने तांकू दे देले कि तमे माने गोटे नेशनली डिटरमाइन जो हमें कहते हमर एनडीसीस आनले राइट हमें तांकू दे तमे भी डिसाइड करके कहो कि तमे केबे सुधा दे परिबो आगरो से माने क्योटो प्रोटोकॉल हिसाब से कोन कहतले कि दिस इज द लिमिट हमको फेज आउट करे अछि तापर पेरिस रे किंतु कहले समस्त को कि यू टेक योर टाइम तमे हमको गोटे टाइम को तमे केबे सुधा करि परिबो आईएनडीसी जोटा कह जाउछ राइट समस्त एबे निजे निजे टारगेट्स दोछन इंडिया भी देछि कि हमें 2070 सुधा कार्बन न्यूट्रलिटी आनिबो सही टाइप ओके both of them fall under the frameworks of UN UP एबे हमें देखिले हां ओके एटा क्योटो प्रोटोकॉल आउट नेक्स्ट थरा आसले सेटा हमें भल रे करबा हला यूएनएफ ट्रिपल सी UNEP under AS okay even Kyoto protocol रे से माने कार्बन ट्रेडिंग विषय भी कथा आइतिले राइट व्हाट इज कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली से माने कोन कहउछन जदी सपोज दिस इज द लिमिट कि तमे एतकी ही एमिट करि परिबो गोटे कंट्री लेट्स से कंट्री इज जर्मनी से एतकी एमिट कर दिस क्रॉस कर गेछ 100 लिमिट थिला से 150 कर गेछ आ गोटे कंट्री अछि जे कि करिनि सतिति तो से माने कोन करबे ए क्रेडिट ता ट्रांसफर करि हबो राइट के मु तबले से क्रेडिट दे दोछि ट्रांसफर करके ता बदला ताको सर्टिफिकेट मिल जिवो कि जहा भी एटा को कहै होछि कार्बन मार्केट रे माने कार्बन ट्रेडिंग ओके एटा से माने क्योटो प्रोटोकॉल रे भी आनिथिले ए विषय रे कथा आइथिले बट पेरिस रे से माने लाइक दे डिफाइंड इट हला तो सेतरे से क्वेश्चन रे कोन पचाउ छै ना पेरिस एग्रीमेंट हैज अ प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी ट्रेडिंग कंपल्सरी केबे भी करना थिबो एटा कोन जहाले भी तुम वॉलंटरी जिंस so this is wrong statement it allows nations which are unable to meet the reduction target to purchase carbon credits एबे मु कहली जा सपोज मोर 80 हेछि आउट जनकर 120 तो मु ताटू बाय करने भी राइट क्रेडिट्स कार्बन ट्रेडिंग यूजेस अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम यस कैप माने कोन गोटे एतिकी लिमिट अछि तमे सेतिकी करि परिबो ट्रेड करि परिबो तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम दैट इज करेक्ट तो 2 and 3 ओनली एबे हम देखिबा कि देखो एटा तीनटा मार्केट मेकानिज्म से मैंने आनले क्योटो प्रोटोकॉल आनला से गोटे हला जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और हला क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म और हला एमिशन ट्रेडिंग जॉइंट इंप्लीमेंटेशन रे बेसिकली काम हला लेट्स से गोटे कंट्री अछि जापान हला आ गोटे कंट्री अछि जर्मनी थर्ड कंट्री लेट्स से इंडिया तो आइदर जापान जर्मनी रे भी तो इन्वेस्ट करि परिबो ना
जापान इंडिया रे भी करि परिबो जो हमें ट्रेड करबा कहउचन त माने कोन से गोटे टेक्नोलॉजी देई कि इंडिया रे लेट्स से गोटे सोलर पावर प्लांट क्रिएट कर दला तो तार जो भी लिमिट हमें काट देबा इंडिया रे आसी गला सेटा तो इंडिया को कोन मिली गला गोटे सोलर पावर प्लांट मिली गला यार जहां भी क्रेडिट थिला सेटा कटि गला ओके तो आइदर इट कैन इन्वेस्ट इन जर्मनी डेवलप्ड कंट्री और जापान इंडिया डेवलपिंग नेशन तो जदि डेवलप्ड रे होछ ना सेटा हम कहउतन जॉइंट इंप्लीमेंटेशन हला the developing रे होछ देखो developing countries and utilize the certified emission reduction to target सेटा को हम कहउतन clean development mechanism ये गोटे सोलर पावर प्लांट की गोटे विंड मिल की जहां भी गोटे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी की टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस दे की गोटे एडवांस कंट्री गोटे डेवलपिंग नेशन को दोची सेटा को हम कहबा सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मिशन और थर्ड होता है एमिशन ट्रेडिंग हम जान ले जो कार्बन ट्रेड हम राइट तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन रे दीटे तक देख रहउची एडवांस कंट्री ओके तो एटा केबे आ जाइतला क्योटो प्रोटोकॉल रे से माने आनिथिले ए जिंसटा फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म हेलो ओके एबे देखिबा हम एटा क्लासिफिकेशन एबे एटा आजिकली बहुत न्यूज रे अछि classification is a process that can convert any carbon based raw material such as coal into fuel gas okay syngas is a mixture of hydrogen carbon monoxide carbon dioxide a synthesis gas or short form both are correct एबे हम देखबा एटा एक्चुअली कोन है जिंसटा बिकॉज़ एटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखो एतरे कोन होची ना कोल को हमें ऑक्सीजन सहित एंड वाटर प्रेजेंस रे गोटे चेम्बर रे एक्सट्रीम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन रे हमें ताको रखुचन तो हमको कौन मिलचे मिक्सचर अंडरगोज एंड गिव्स अ सिन गैस बेसिकली सेटा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन द माने सिंथेसिस मिलबा हमको ता सहित भी मिलबा बाय प्रोडक्ट से H2S CO2 एंड दैट तो काहे केटा कराउची कोल को हमें कोन पई टेंपरेचर प्रेशर देके सब करूछन बिकॉज़ सबु कोल रिजर्व्स इकोनॉमिकली वायबल न थांती राइट कि सब कोल को कोन करे माइनिंग करे पड़े राइट माइन करे पड़े तो सबु कोल रिजर्व्स सेति की गोटे बसेबा आनिबा नॉट पॉसिबल हे भी पारे नहीं कि सेति की पैसा भी माने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आ जाए सेटा भी हे पारे नहीं तो बेटर मेथड हला एटा कि ताको गोटे चेंबर भया करी कि एटा को अंडरग्राउंड रे भी तुम चाहिले कर परिबो हला करी कि ए जे सिंथेटिक गैस देखो हाइड्रोजन मिलुची तो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल राइट CH4 मिलुची तो मीथेन आल्सो कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल ता सहित ए माने को से माने यूज करी कोन करचंदी ना फर्टिलाइजर्स भी बनौचंती ओके तो बेसिकली तुमको मन रखे रछि कि सिन गैस रे कोको गैस आसुची कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आउ तापर हमको मन रखे रछि कि कोल को हमें कोन करचने छी एक्सट्रीम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशन देकी तार सिन गैस काढुचंती ओके देखो एट लिखा है कौन कौन सिन गैस रो यूटिलाइजेशन कौन हे परिबो नंबर 1 पावर जनरेशन हे परिबो जो हाइड्रोजन फ्यूल आसिला तापर फ्यूल प्रोडक्शन हे परिबो ओके आ कौन करि परिबो जो मु कहबी तुमको जेंति कि सिंथेटिक नेचुरल गैस मिथेनॉल तापर तुम फर्टिलाइजर्स हला ए सब करे हे परिबो ता छडा देखो जे जो लिखा है कोल रिजर्व्स ता छडा मो जोटा आनिथिली कि इंडिया में केते कोल रो केतेटा टाइप थाए बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट कहलो केतेटा थाए 4 गोटे हला एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एंड पीट एंथ्रासाइट रे केते कार्बन कंटेंट थाए देखो एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एंड पीट लिख परिबो समझ स्पेलिंग राइट एंथ्रासाइट सब भलो कार्बन कंटेंट है बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल तो 80 to 90% ऑफ कार्बन कंटेंट है 95% तो बहुत ही अधिक अब वोलेटाइल मैटर जो सब था ना सल्फर ऐश ये सब बहुत कम थी बस है बहुत कम है तमर सल्फर एंड वोलेटाइल मैटर बहुत कम इंडिया रे एटा कोठी मिले खाली जम्मू एंड कश्मीर रे मिले कालाकोट बोले जगह अच्छे सेठी मिले हला 80 to 95% कार्बन कंटेंट अच्छी ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर और वोलेटाइल कंपाउंड्स बहुत कम तो तब जळेले तमरा एमिशंस बहुत कम हो ओके एंथ्रासाइट देन कम टू बिटुमिनस रे केते एटा मोस्ट वाइडली हमरो एटा ही अछि बिटुमिन 60 to 80% ओके एकरे कार्बन कंटेंट हला 60 रु
80 आउ एटा यार कलर हैला पूरा ब्लैक आम ओडिसा रे बेटा ही अछि झारखंड ओडिसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ एमपी ए सब जगह रे बिटुमिनस कोल ही मिले ओके तो एटा हला तमर कोन एंथ्रासाइट एटा हला बिटुमिनस देन कम टू लिग्नाइट एटा को ब्राउन कोल को एटा को ब्लैक कोल को आउछ एटा को ब्राउन को आउछ ओके एटा आउरी कमी जीवो 40 ରୁ 55% और इतने बहुत धुआं स्मोक ए सब कंटेंट बहुत अधिक था हीट हीट भी बहुत कम था इतने एटा सब कोठी अछि ना राजस्थान तमिलनाडु असम जम्मू एंड कश्मीर भी टिके मिले राजस्थान तमिलनाडु ए सब रे कोन मिले लिग्नाइट तापरे फाइनली हमें आसीबा पीट पीट सबुटु ये कंडीशन रे थाए तो लेस देन 40 to 55% है तामाने कोन पीट ता सेटा एते फॉर्म हेइनी एका तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज था ना हम कोल ता कोन फॉसिल गुडा को दबी दबी बहुत दिन परे हे जाय तो सेटा फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन री अछि तो हम आंसर साइड रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कालाकोट इन जम्मू एंड कश्मीर गोट जगह रे देखिया को मिलुछ ओडिसा कितना नंबर कोल रे सेकंड झारखंड तापर ओडिसा ना थर्ड रे ओडिसा सेकंड रे ओडिसा ओके टोटल कोल रिजर्व्स ओडिसा रे कोठी कोठी कोल मिले कहला तालचेर अनुगुल हां ओ ठीक अछि अब देखिबा हम स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स देखो तांगा ना रे ही अछि पीओपीस को आ जाउ छ तक पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पर्सिस्टेंट माने कोन माने बहुत लंबा समय जाय रहिबो ता माने कोन हेतिबो एटा वाटर सॉल्युबल हे नथिबो राइट यदि वाटर सॉल्युबल नुहे ताले गोटे कांसेप्ट अछि जानते ना बायो मैग्निफिकेशन आउटे बायो एक्यूमुलेशन माने कोन सेम ट्रॉपिक लेवल रे रहिला मैग्निफाई माने उपरु को जीवो सेटा केबे पास करिवो ओनली इफ नॉट हाई वाटर सॉल्युबल है तो एक्सक्रीटर रे पळेबो राइट तो एमती किछि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जोटा पर्सिस्टेंट बहुत लंबा समय जाय एटमॉस्फेयर रे रहउचन तो सेटा को कहै अछि कॉप्स स्टॉकहोम रे तापे गोटे कन्वेंशन हेतला कि ताकू इराडिकेट करिया अछि बिकॉज़ बहुत हार्मफुल से गुडा सब ओके तो से पूछ कि इंडिया इज येट टू रैटिफाई द स्टॉकहोम कन्वेंशन एटा भूल ऑलरेडी इंडिया रैटिफाई कर साइलेंट 2006 रे रैटिफाई कर दी थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज डेजिग्नेटेड एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म वो एबे ही कहथि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कोन करे ओटे फाइनेंशियल मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक को ट्रस्टी रखी कि से पैसा दिए कहा कहा को पैसा दिए ये ना यूएन एफ ट्रिपल सी को पैसा दे यूएन सीसीडी को पैसा दिए यूएन सीबीडी को पैसा दिए तापर हला याकू भी पैसा दिए हमें जो देखले स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीस एंड फाइनली मिनामाटा कहां पे इतला मर्क्यूरी हला ओके से कोची कि इंडिया इज येट टू रैटिफाई ऑलरेडी रैटिफाई कर सची द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी डेजिग्नेटेड द फाइनेंशियल मैकेनिज्म करेक्ट द कन्वेंशन कॉल्स टू लिमिट द यूज ऑफ डीडीटी एंको अंडर रे से माने ना गोटे कन्वेंशन रे कोन करिवे से माने डिक्लेयर करिवे कि एडा हला ताकू तुम एलिमिनेट करो दे विल गिव आउट अ लिस्ट राइट से अंडर से गोटे डर्टी डजन देचंती माने डजन माने कोन 12 टा एबे सेतरे 12 रु अधिक ही सलानी माने सेतिकिटा पोल्यूटेंट्स ताकू तुमको धीरे धीरे एलिमिनेट करा अछि सेतरे इवन डीडीटी भी अछि ओके तो 2 and 3 ओनली इनकरेक्ट पचाछि तो 1 हबो ओके इतरे लिखा है देखो ओके
इंडिया केबे राटिफाई करला 2006 रे बिकॉज़ बट एडा मन रखिबो देखो कि ऑप्ट आउट ऑप्शन इंडिया रखितिला माने लीगली बाउंडिंग नुह से चाहिले सेटु बाहरी भी पारिबो ऑप्ट आउट माने मु चाहिबे ते मु सेटु बाहर जिबि से मु कन्वेंशन साइन करछि सिना किंतु इफ एनीथिंग माने हला ताले मु सेटु बाहर जिबि लेट्स से गोटे एमटी कहबे जोटा इंडिया को बहुत दरकार प्रोडक्शन प्रोसेस रे राइट ओके तो एठी देखो एठी डर्टी डजन्स को देखिबा हमें देखो एडा ले जो कोथली जीईएफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म कहा कहा दोची यूएन स्ट्रिप ट्रिपल सी यूएनसीसीडी यूएनसीबीडी मिनामाटा और एससी पॉप्स ला ओके एथले देखो टोटल जो डर्टी डजन्स रे एठी 8 एठी हला 2 केते हला 10 जे 2 12 टा हला कि ना 8 टा एथरे पेस्टिसाइड अछि ओके इवन डीडीटी भी थिला डीडीटी हमें कोन यूज करथिले मसा मारिया पे ये समस्त स्प्रे करंती ना तो सेटा को भी से कहि एलिमिनेट करो सेटा भी गोटे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट माने रही रही एटमॉस्फेयर रे पसुछ टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स तापरे टू अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट माने ऐसा जमे तको यूज करना बट से कहार गोटे बाय प्रोडक्ट थे कि पळे आउछ इंटेंशनली यूज नाही बट अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ओके तो डर्टी डजन इज रिलेटेड टू व्हाट स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants ସେଥିରେ 8ଟା pesticide ଅଛନ୍ତି 2ଟା industrial chemicals and 2 unintended byproducts ତାପରେ ହେଲା ଏ जो जीईएफ ना एटा यूएनईपी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक सब मिसी कि यूएन जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनै चांदी ताकि से माने पैसा दे परिबे राइट ये कहा को हेल्प करे मोस्टली डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ହେଲା ओके ओके एटा देखिबा ଏବେ ଆମେ प्लूविकल्चर माने कोन आर्टिफिशियल रेनिंग क्लाउड सीडिंग जोटा को आउछ इज द एक्ट ऑफ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन और रेन हमें कोन करछन सेतरे एटा को क्लाउड सीडिंग कहै छै ओके माने वर्षा हमें परिवार चेंज इन द वेदर पैटर्न क्लाइमेट को चेंज करवानी बिकॉज़ क्लाइमेट गोटे बहुत बड़ कांसेप्ट ताको चेंज करे वेदर को चेंज मैं पहर दिन चाहूची वर्षा हवा पे चेंज हे पारे इट इज अ परमानेंट वे ऑफ suppressing pollutants present in the air which of the following are given are correct permanent way of suppressing the pollutant तो ता प्रोग्राम देखिबा एडा कोन हला क्लाउड so that is a more important topic क्लाउड सीडिंग कोन एक्चुअली कोन हुए क्लाउड रे कोन थो डस्ट पार्टिकल्स थिबो जे कि सब होल्ड ऑन करिवो तम वाटर ड्रॉपलेट्स सेटा ही क्लाउड गोटे डस्ट थिबो ता चारि पट रे सब हमते वाटर ड्रॉपलेट्स गुडा को एक्युमुलेट हे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करी तो फाइनली सेटा गोटे क्लाउड हो राइट ए जो न्यूक्लियाई भला कोन ताको कोन कोन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आई थी माने सी गुड बाइंडिंग एबिलिटी थी पर से डस्ट माने कोन डस्ट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट ता आक पाखरे तो वाटर मॉलिक्यूल्स गुडा को कंडेंस हे जिबे तापर बेसी ओजन हे गले खस पडिबो तो डाला वर्षा हवा राइट रेनफॉल तो सेही जगह रे जोटी वर्षा होनी लेट्स से दुबई यूएई रे एबे करा हेतला राइट सेठी सेडा ही मेन जिंस से डस्ट पार्टिकल ए सब जिंस जो नाही माने जोडा होल्ड ऑन करिवो तो ए माने सेटा कोन कर देले इंजेक्ट कर देबे क्लाउड रे से डस्ट गुडा को इंजेक्ट कर देले से वाटर पार्टिकल्स को होल्ड कला तबरे वर्षा हबो तो केमती इंजेक्ट करबे आइदर प्लेन रॉकेट कुछ भी नहीं कि सेटा को उडे इंजेक्ट कर देबे कोन इंजेक्ट करा होची सेटा इंपोर्टेंट देखो सेतरे ना कोन इंजेक्ट करा है सिल्वर आयोडाइड इंजेक्ट करा है परिबो हां यूपीएससी रे पढ़ला पोटेशियम आयोडाइड भी इंजेक्ट करा है परिबो ड्राई आइस माने कोन सॉलिड CO2 ଆଉ आई थिंक लिक्विड प्रोपेन ए चारटा जिंस तमे इंजेक्ट करि परिबो ओके कोन कोन कहलो सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड ड्राई आइस लिक्विड प्रोपेन ओके there लिखा है in aircraft inject silver iodide or other substance into the atmosphere the chemical mimic the particle that serve as surface for condensation that creates water droplet once the condensation create water droplet large enough वर्षा हे जीवो तो से जेहेतु से पार्टिकल्स नाही हमें सेटा को इंजेक्ट कर दबा ता चारियाडे वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड ऑन हे जीवो तापरे खसी पड़े सेटा कोन कहा होची क्लाउड सीडिंग ओके
एटा देखि पारि गोटे आर्टिकल आस्तिला न्यूज़पेपर रे एटी देखो लिखा है सिल्वर आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड ड्राई आइस लिक्विड प्रोपेन ओके इस सब जिनस यूज हो पारिबो आजिकल गोटे जिनस यूज होची टेबल सॉल्ट NaCl सेटा भी बहुत पॉपुलर इंग्रेडिएंट ओके आउ हला तमिलनाडु रे इंडिया रे फर्स्ट क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन हेतिला ठीक अछि ठीक अछि मूविंग ऑन आसी वाला देखो INDC एबे हमें कथा होते ना पेरिस रे आसी छि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ओके एटा कर दबा तापरे आ गोट दिटा क्वेश्चन कर होला ओके देखा एबे हमें कथा होते इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो पेरिस रे से माने कोन कहले हमें निजे टारगेट्स निजे दब सेतरे से पूछी INDC ए बाइंडिंग नेशनल प्लान एटा बाइंडिंग नो एटा वॉलंटरी माने तुमको करबा अछि माने तमे कहबो कि मु आज 12 घंटा पढिबी न पढिले कोन माडो माने घर से माडो खाउला ना इट्स लाइक अ निजे अकाउंटेबिलिटी तमे रखुछ सही बडा कथा माने एटा वॉलंटरी बाइंडिंग नो तबे अपडेटेड NDC रीड्स put forward mass movement for lifestyle for environment that is correct सेदन मु कहथि लाइफ टा को केबे को आइतला ग्लासगो वेरी गुड successful implementation of the targets will bring climate justice correct ये तो wider statement है ना तो एटा भूल आंसर will be 2 and 3 एबे देखिबा कि इंडिया रा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कोन कोन ओके इंडिया सेटा कहाँ अंडर से माने करथिले UNFCCC अंडर रे करछन सेटा समय पीरियडिकली रिव्यू करा होची सेटा एटा इंपोर्टेंट ग्लोबल स्टॉक टेक को आ जाउता माने प्रति 5 वर्ष रे जाई कि तमे कहबो वेयर आर यू माने केते मु कहितली एटा मु करि परिबी एबे मु कोठी अछि सेटा कह जाउची ग्लोबल स्टॉक टेक आ इंडिया गोटे ही कंट्री जे तार NDC रीच कर देथिला हला countries agreed under the 2015 UNFCCC Paris Agreement to work together okay in limiting the global warming within 2 degrees Celsius देखो एटा ना वॉलंटरी प्लेजेस जहां भी से माने कहबे एटा वॉलंटरी ओके एवरी 5 इयर्स से हमें करथले जोटा ग्लोबल स्टॉक टेक कहा होतला बट एबे सेटा एवरी कपल ऑफ इयर्स से करा जाउछ ओके देखि दियो ओल्ड NDC कौन थिला अपडेटेड NDC अछि तो सेदना हमें ऑलरेडी देखिथिले राइट एमिशन इंटेंसिटी 45% रिड्यूस करिवे बिलो द 2005 लेवल बाय 2030 नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी केते करिवे 50% रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट रो हबा कथा कार्बन सिंक 1 बिलियन टन हला आगुरु से माने करते से 2.5 to 3 अति मोटिवेटेड हे परलानी बता तापरे नेट न्यूट्रलिटी बाय 2070 ओके एडा क्वेश्चन करो एटा लास्ट टाइम एटा मु करैथिली तो हेंस करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड 5 पॉइंट क्लाइमेट पंचामृत रे कोडा नाही करेक्ट 2070 ठीक अछि टाइम हे गला हो हलाणी ना नाही क्लोज कर दवा